To the visuals coming in live from Ayodhya, that is the Ram Nagari. It's a historical moment right now, viewers, as it's a Guinness World Record, an attempt, a shot at the Guinness World Record there in Ayodhya once again on the eve of Lakshmi Puja. And you can see those lakhs and lakhs of diyas, 28 lakh diyas, 28 lakh diyas to illuminate. In fact, they are lit up this evening right at the Sandhya Kal, that is the sunset, the dusk timing. And you can see the attempt at the world record. 500-year-long wait has ended, viewers. Ram Lala is at his rightful abode at the Bhavya Ram temple. And after 500 years, he's witnessing this beautiful, spectacular Diwali, the grandeur, the spectacle of the Deepotsav in Ayodhya right now being witnessed by thousands of people who have thronged to Ram Ki Paidi. Visuals coming in right now. The light show has begun, as it does traditionally every time the sun sets. And you can see the Ramayana will also be played out. The entire story of Ramayana. And these are visuals coming in from Ram Ki Paidi, and this is along the banks of Saryu River. Visuals coming in, and this just before that we saw Chief Minister Yogi Adityanath addressing the public meeting, the gathering to celebrate Ayodhya. And you can see, viewers, Ayodhya has been decked up now with 28 lakh diyas. There have been 30,000 volunteers, viewers, for this celebration. Of course, it's a big festival across the country. But in Ayodhya, of course, it's special as it's the abode of Lord Ram. It's celebrated as the homecoming of Lord Ram after 14 years. But this Diwali has come after 500 years, viewers, in Ayodhya. Diwali grandeur there. And there are many people from across the country who have thronged to take a dip in the Saryu River on the occasion of Diwali, viewers. And Yogi Adityanath, along with several other cabinet ministers, BJP leaders, have graced the occasion of the celebrations today. And Ramlala, as he is in his rightful abode, is now witnessing this celebration after 500 long years. Chief Minister Yogi Adityanath today lauded the efforts of those who fought for the construction of the Bhavya Ram temple. He also talked about the politics around the opposition to the construction of Ram temple. He also reiterated that similar efforts should be made in Mathura and Kashi. For the Kashi Vishwanath temple, for the Gyanvapi, and for the Shahi Eidgah case, he made a pitch for that. He spoke of Ram as the foundation of Bharat. And viewers, as we see, we are getting to you the visuals coming in from Ayodhya, the banks of Saryu, Ram Ki Paidi, and of course the Deepotsav. 28 lakh diyas have been lit up in Lord Ram's land to create the world record, the Guinness World Record. 1,100 people to perform the largest aarti together at the Saryu Ghat. And viewers, you can see those visuals coming in. It's the first Deepotsav after the Pran Pratishtha of Ram Mandir in Ayodhya. Every effort being made to celebrate. Every effort being made to celebrate the festival of lights, the festival of Lord Ram's homecoming, festival of auspiciousness, welcoming the new year. And Deepotsav, remember, viewer, this is a 5-day festival, viewer. This is a 5-day festival that will, of course, witness one of the biggest spectacles today on the banks of Saryu. And tomorrow, of course, is the Lakshmi Pujan. The hymns have started. The Aarti will be beginning. Aarti, also a record-setting one. And viewers, remember,
Prime Minister Narendra Modi also yesterday had spoken about how this Diwali is historic, that this year's Diwali will be historic as thousands of lamps will illuminate the temple, marking the festival after a 500-year-long wait. Viewers, 30,000 volunteers have been mobilized, 28 lakh days across 55 ghats. The new ghat, old ghat, Bhajan Sandhya being the primary locations for the festivities there. And 30,000 volunteers. Shobha Yatra also planned with 18 tableaus. We saw the beautiful chariot today. Artists from 16 states and 6 nations. It's Ek Diya Ram Ke Naam virtual campaign that has been launched. 10,000 security personnel deployed in this state. Special focus on Ayodhya, of course. Heavy security in and around Ayodhya today, tomorrow. ATS, STF and CRPF commandos deployed for security. 17 routes to Ram Ki Paidi only for pass holders. There's a tight security as it was during Pran Pratishtha, and after this is the first Diwali, of course, after Pran Pratishtha, and there are hundreds and thousands of tourists from across the country, religious, spiritual tourists who have thronged to Ayodhya city to witness the Deepotsav. My colleague Ajay Dubey joins us live on the broadcast from Ground Zero from Ayodhya, and of course it's an entirely Ramamay atmosphere. You know, Ajay, it's another attempt at a Guinness World Record. What are you witnessing around? Help us soak in the fever that you are actually experiencing right now there. देखिए, यहाँ की जो ऊर्जा है, जो यहाँ की वाइब है, वो दिखाकर समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। कैसे देखिए, ये राम की पैड़ी पर इन दियों को देखिए, कैसे ये जो दिए हैं यहाँ पर राम की पैड़ी पर, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस जगह पर जो सुंदर छटा उभरती दिखाई दे रही है। ये जो दिए हैं, ऐसा आभास हो रहा है कि आकाश गंगा से जो तारे हैं उतर कर राम की पैड़ी पर अयोध्या में आ गए हैं, और अब से कुछ देर में जब ये तमाम दिए जगमगाने लगेंगे तो ये सुंदरता एक अलग स्तर की होगी। अब पीछे मुड़कर हमारे विजय आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पर जो ये वॉलंटियर्स हैं वो लगातार इन दियों को जला रहे हैं। कैसे टीम जो है वॉलंटियर्स की एक एक दिए पर बैठकर कुछ माचिस से, कुछ अगरबत्ती, जो कुछ मोमबत्ती से और अलग अलग माध्यमों से इन दियों को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ मिनटों में ये पूरे दिए जल चुके होंगे और दिदीप्यमान ये पूरी छटा होगी यहाँ पर। और जो प्रभु श्री राम की भावना अवधपुरी को लेकर, अयोध्या को लेकर है, उसे जाहिर करते हुए, प्रभु श्री राम के भाव को जाहिर करते हुए तुलसीदास लिखते हैं कि अवधपुरी मम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को वो जो प्रसंग को बताते हुए भाव जाहिर करते हैं प्रभु श्री राम के, वैसी ही भावना जो अवधपुरी को लेकर प्रभु श्री राम की, वही भावना देते हुए यहाँ पर अयोध्या वासी दिखाई दे रहे हैं। तो ये अयोध्या वासी जो है अपनी भावना जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको और आगे दिखाते हैं कैसे आगे तक पूरा ये जो हिस्सा है यहाँ पर हजारों की हजार तादाद में वॉलंटियर्स है और नारा है जय श्री राम का, उद्घोष है जय श्री राम का। 500 साल के इंतजार के बाद आज अयोध्या में रामलला का मंदिर भी है और दीपोत्सव भी है। और अयोध्या वासियों के भाव को जाहिर करते हुए तुलसीदास लिखते हैं कि हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए, पुण्य मंदिर महाबात बताए, आवत नगर कुशल रघुराए। तो भरत जब बताते हैं अयोध्या के लोगों को कि प्रभु श्री राम आने वाले हैं, तो उसको लेकर जो उत्साह था, वो तस्वीर, जो भाव था, वो तुलसीदास ने जाहिर किया और वही भाव आज बनस्पत अयोध्या वासियों के भाव में दिखाई दे रहे। तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो ये जानकारी थी कि वो मंदिर में जाएंगे, दिए जलाने के लिए जाएंगे, उनकी भी तस्वीरें आपसे आने लगेंगी और ये मुख्यमंत्री भी दीपोत्सव के इस पर्व में भागीदारी कर रहे हैं। और केवल राम मंदिर में ही नहीं बल्कि हनुमानगढ़ी में, अयोध्या के हजारों मंदिरों में और उत्तर प्रदेश देश के मंदिरों में ये दिए जलाने की जो आज के इस पर्व को लेकर एक जो भाव है सनातन प्रेमियों में, वो दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जहां वो पहुंचे हैं रामलला के मंदिर में और वहां पर दीपोत्सव का पर्व है। घी का दिया जो है मुख्यमंत्री जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अयोध्या जो उनके मुख्यमंत्री काल में आने का जो आंकड़ा है वो संजीदगी को बताता है कि अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अयोध्या के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सीरियस हैं और इसके ही कारण आज छटा बदली हुई दिखाई देती है, आज बात बदली हुई दिखाई देती है। फिर
एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उन तस्वीरों को देखिए, जरा समझिए कि कैसे दीदीप्यमान यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। कैसे ये दिए जब अब जलने लगे हैं, इन दियों के जलने से ये हिस्सा कुछ ऐसा दिख रहा है कि आकाश गंगा से तमाम जो तारे हैं वो उतर आए हैं। और इन भावनाओं को जाहिर करते हुए फिर एक दोहा आपको तुलसीदास का लिखा हुआ सुनाते हैं कि रिपुरन जीती सुजत सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभुआवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रषावंत जिमी पाई पीयूषा। जब सीता राम प्रभु आते हैं, लक्ष्मण उनके संग आते हैं, तो जो जनभावना थी उसे जाहिर करते हुए ये दोहा है। और इन तस्वीरों को देखिए कैसे अब दिया है। As we speak, viewers, we are getting live visuals from inside the Bhavya Ram temple there to the right side of your screens, as Chief Minister Yogi Adityanath inaugurating the Deepotsav has paid a visit to the Ram temple. You can see him inside the sanctum sanctorium, and there is the lighting of the lamp. The ceremony has begun. Puja Archana taking place right now inside the Ram temple, Ram Janmabhoomi temple. Chief Minister Yogi Adityanath has been at the forefront of the festivities, viewers. And remember, it's quite personal. It's a personal commitment for Yogi Adityanath. Since the construction of Ram temple, development of Ayodhya is also associated with the role that has been played by the Gorakhnath Mutt. The Gorakhnath Mutt of in the Ram temple. He is the Mathadish, remember, of the Gorakhnath Mutt. And here you can see him offering prayers, Shashtang Danvat Pranam from the Yogi, from the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, along with other leaders there, and offering prayers and offering prasad and performing the rituals as per the traditions in Sanatan Dharma, and also offering the donations in the donation box, making the donation in the donation box. And as we speak, viewers, the attempt being made for the Guinness World Record at the Saryu Ghat, and he has inaugurated, Chief Minister Yogi Adityanath has just inaugurated the Deepotsav with this. And viewers, these are visuals coming in. The first time we see celebrations, this is the first Deepavali, is the first Deepotsav for Ram Lala, who has been now at his rightful abode. And this is happening first time after the construction of the Bhavya Ram temple. 500-year long wait has ended, and Yogi Adityanath calling it a moment of pride for all. He's attending the prayers, the rituals in the presence of Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat, and also launching the tourism app. Tourism app has been launched, releasing the book Ayodhya Mayor as well. And viewers, remember, this is the 8th Deepotsav. If you talk about traditionally, it's the 8th Deepotsav, but the first after the Pran Pratishtha of the Ram Janmabhoomi temple. And Chief Minister Yogi Adityanath has just launched the tourism app today. He addressed a gathering in Ayodhya, making the pitch for Kashi, making the pitch for Mathura, Shri Krishna Janmabhoomi temple as well, and saying that the movement of Ram Janmabhoomi has inspired many people. It's a moment of pride for everybody. That's what the Chief Minister has said, that Kashi is shining, the world is seeing the grand Kashi, and he's also, of course, invoked Ayodhya in the same breath, saying that the double-engine government will deliver on what they say, they will deliver on their promises, and talking about how the previous dispensations have neglected Lord Ram, neglected Ayodhya Nagari, the of course house, the home of the town of Lord Ram, and how several parties in the past, several governments in the past have raised questions on the existence of the very existence of Sanatan Dharma and Lord Ram, of course. So there you have the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, lighting the lamps. There you have, he's inaugurated the Deepotsav, the 8th Deepotsav, and the first after the inauguration of Bhavya Rama temple. Gajendra Singh Shekhawat along with Yogi Adityanath lighting the lamp. Brajesh Pathak on the other side of Gajendra Singh Shekhawat lighting the lamps. This is the 8th Deepotsav, 8th edition of the Deepotsav, being inaugurated right now as we speak. And that's, and of course, going to be another Guinness World Record, as we witness almost every year now. So that's the big update we're getting in right now, viewers. It's a spectacle right now in Ayodhya. In fact, the entire country is celebrating the Festival of Light, the Festival of Lord Ram's homecoming, the Festival of auspiciousness, and celebrating this beautiful festival in Ayodhya, of course, is a different experience altogether, as my colleague
Ajay Dubey was telling us, he was showing us the visuals that came in from Deepotsav and how 28 lakh diyas have been prepared for this lighting of ceremony for this world record. And the Deepotsav has been now officially inaugurated by the Chief Minister and the Tourism Minister, the Union Minister of Uttar Pradesh, and also the Deputy Chief Minister. So Ayodhya celebrating Diwali with the 28 lakh diyas there. A proud moment for everybody, said Chief Minister Yogi Adityanath. Also talking about how the Prime Minister has time and again visited Ayodhya, laying the foundation stone for the Ram Temple, even during the COVID pandemic as well. And saying that again, he reiterated how the mafias will be eliminated. Anyone who in fact obstructs the growth and development, the progress of the state and of Ayodhya, whoever becomes a barrier in the path of humanity and development, their fate will be like that of the mafias of Uttar Pradesh. That's what the Chief Minister said a while back. And of course, all this amidst the celebrations, the grand celebrations, the beautiful celebrations in Ayodhya. That is the Ram Nagri, that is the town, that is the birth town of Ram Lala. My colleague Ajay Dubey is back with us on the broadcast from the Saryu Ghat, from Ram Ki Paidi, I believe. Well, Ajay, we can see it's a beautiful sight there. We can see Chief Minister Yogi Adityanath has now officially inaugurated the Deepotsav, another attempt at a world record. And along with that, prior to this, he made a very powerful speech. He delivered a very powerful speech where he spoke and invoked, in fact, the movement for the Kashi temple and also the Shri Krishna Janmabhoomi temple in Mathura. Ajay. बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने अपना जो उनका पॉलिटिकल स्टाइल है उस स्टाइल से बहुत ही क्लैरिटी के संग अपने स्टेटमेंट को दिया है। और मैं आपको जहां मौजूद हूं वहां की जो ऊर्जा है उससे रूबरू कराता हूं। यहां पर जय श्री राम की जो उद्घोष है उन्हें सुनिए, किस तरीके से दीपोत्सव का दिया जलाते हुए तमाम जो लोग हैं वो लोग दिया जलाते हुए जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। देखिए, तमाम उत्साहित यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये कैडर है, ये वॉलंटियर्स हैं जो दिए को उत्साह के संग जला रहे हैं। क्या ये दिया जलाते हुए क्या भाव आ रहा? अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है। कितना मैंने, बहुत लोग तो कह रहे हैं कि पटाखा मत जलाओ, दिया मत जलाओ। नहीं सर, दिया जलाओ, पटाखा से अनुभव हो रहा है सर, दिया जलाना चाहिए, पटाखा से इम्पॉसिबल। देखिए, तो लोग जो है अपने भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं। अब जरा देखिए, लेजर की लाइटें भी आपको आसमान में दिखाई देंगी और जमीन पर ये दिए दिखाई देंगे और ऐसा आभास होगा कि आकाश गंगा से तमाम जो टिमटिमाते सितारे हैं वो उतर आए हैं और सरयू के इस घाट पर, राम की इस पैड़ी पर, जमीन पर उतर आए हैं। ऐसा आभास यहाँ पर हो रहा है। और ये जो वॉलंटियर्स की मेहनत है, 3 दिन से दिए बिछाए गए, आज सुबह तेल डाला गया, बाती डाला गया और उसके बाद अब ये अवसर आया है। कुछ मिनट गुजरे हैं, दिए तमाम जो जलते दिखाई दे रहे हैं और अब से कुछ मिनटों में आप जरा एक बार और इन तस्वीरों को देखिए। ये जो घाटों पर दिए हैं, ये दिए घाटों पर भी जलते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए, सियावर रामचंद्र की जय के नारे हैं, उद्घोष है। ये जो भाव है अयोध्या वासियों का, तमाम इन वॉलंटियर्स का, ये बता रहा है कि आज का दिन कितना बड़ा है। आज के दिन का जो भाव है वो कितना बड़ा है, कितनी ऊर्जा आज के दिन इन अयोध्या वासियों को मिली है इस अवसर पर। और इस पूरी भावना को जाहिर करते हुए तमाम ये अयोध्या वासी दिखाई दे रहे हैं। तमाम हमने दोहे आपको तुलसीदास रचित बताए जो प्रभु श्री राम की भावना को जाहिर करते हैं अयोध्या को लेकर। अयोध्या वासियों के उत्साह को भी जाहिर करते हुए दोहे हमने आपको बताए और इन तमाम दोहों के बीच में अयोध्या वासियों के उत्साह, ऊर्जा को जाहिर करने वाली बातें। और आप देखो, दियों को देखिए कैसे तमाम ये बच्चे जो है सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, इस अवसर को लेकर उत्साह मनाते भी दिखाई दे रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए। और यहाँ पर एक स्वर्णिम छटा दिखाई दे रही है। क्या आज के दिन से ऊर्जा मिल रही है? नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा है और मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मुझे सीता स्वयंवर का एक गीत याद आता है कि राम को देखकर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। और यह अयोध्या को देखने के बाद मेरा बस इतना ही कहना है कि आज अयोध्या वासी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं और पूरे भारत के लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा यहाँ पे छटा बिखरा हुआ है, दीपक जल रहे हैं, चारों ओर जगमगाहट है। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, एक बार उद्घोष कीजिए, जय जय श्री राम, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की
जय, पवन सुत हनुमान की जय, ये उद्घोष आज के दिन यहाँ पर राम की पैड़ी पर जो है भावना को जाहिर करता हुआ ये उद्घोष है। 500 साल का इतिहास का आज समापन, राम मंदिर भी है और ये उत्सव भी है, दीपोत्सव भी है। तो ये जो ऊर्जा, ये भावना है आज यहाँ राम की पैड़ी पर देखने को मिल रही है। हम देख सकते हैं किस तरह से जगमगा उठा है पूरा अयोध्या और इस तरह से लोगों में काफ़ी जो उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरा राम में हम देख रहे हैं पूरा जो माहौल है उस वक्त हो चुका है। अजय दुबे, हम आपके पास फिर से एक बार सवाल के साथ मैं आना चाहती हूँ कि किस तरह से ये जो जिस तरह से सजाया गया है 500 साल बाद जो है अयोध्या वासी ही नहीं पूरे देश को ये मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी साथ साथ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है बड़े साफ तौर पर कि हमें जिस तरह से आज अयोध्या दिख रहा है वैसे ही हमें काशी को भी और मथुरा को भी इसी तरह से सजाना होगा। क्लियरली मेकिंग अ पिच फॉर द मूवमेंट्स फॉर द टेम्पल, बी इट द विश्वेश्वर महादेव टेम्पल इन काशी एंड ऑल्सो श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल, बिकॉज द डिस्प्यूट इज अंडर वे, मैटर इज इन कोर्ट। एंड योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जो है उस बात को उजागर किया है कि हमें जो है अयोध्या को की तरह ही काशी और मथुरा को भी सजाना है और उस टेम्पल मूवमेंट को जो है उस मुहिम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है इससे पहले जो स्पीच पे वो बात कर रहे थे। अजय, बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने ना केवल आज के भाषण में बल्कि बार बार ये बात दोहराई है। उन्होंने कई मंचों से ये बात कही है। वाराणसी को लेकर उनका एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू भी था कि जो साक्ष्य वहां से मिले हैं क्या वो इस बात की तस्दीक करते नहीं दिख रहे हैं कि वहां पर क्या था। तो वाराणसी को लेकर, मथुरा को लेकर जो मुख्यमंत्री का स्टैंड है, जो हिंदुत्व की लाइन पर मुख्यमंत्री का स्टैंड है वो बिल्कुल ही स्पष्ट है। उसमें जीरो टॉलरेंस है, उसमें जीरो चेंज का स्कोप है और वो जो क्लैरिटी है वही उनकी पॉपुलैरिटी का यूपी में कारण भी है। जो लॉ एंड ऑर्डर पे उनका इकबाल है उसका कारण भी है। और जरा इस छटा को देखते भी रहिए कैसे अब जब मिनट दर मिनट दिए जलते चले जा रहे हैं तो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा आभास हो रहा है कि आकाश गंगा से तमाम तारे उतरकर जमीन पर आ गए हैं। और इन तस्वीरों के संग वो जो भाव है जो बाबा तुलसीदास लिखते हैं अवधपुरी के लोगों को लेकर, अयोध्या के लोगों को लेकर कि उनके मन में क्या आता है जब राम पहुंचते हैं यहाँ पर कि रिपुरन जीत सुवत सुरगावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत सुनत बचन बिसरे सब दुखा त्रषावंत जिमी पाई पीयूषा। कि जब जानकारी अयोध्या वासियों को मिलती है कि प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के संग आ रहे हैं तो उसके बाद जो हर्षोल्लास अयोध्या में देखने को मिलता है, तमाम अपने गमों को अयोध्या वासी भूल जाते हैं। और आज का दिन भी है इस दोहे के संग। आप कुछ कह रहे थे तो सुनकर जी, बहुत सही बात आप भैया। तो अपने दुखों को जिस तरीके से उस दौर में, उस युग में लोग भूल गए थे, उसी तरीके से आज जो उत्साह, जो उमंग और जो चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही है। कुछ कह रहे हैं? नहीं भैया, कुछ कहता ना पे जो करत हुए में कितना मजा आवता है, करे में कौन भाव आवता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। जी। कितना देर से लगे हैं यहाँ पे? यहाँ से हम 2 बजे से आए हैं। 2 बजे से? जी। कितना टाइम लगा दिया बिछाए में, बाती लगाए में? जी बहुत टाइम लग गया। बहुत टाइम लगा। जी। और लोग कह रहे हैं कि दिया मत जलाओ, पटाखा मत दगाओ, उनको क्या कहो? पटाखा मत दगाओ, उनको क्या कहो? ये गलत बात है। जी आइए। मैं इस पे एक कविता लिखा है, मैं कवि हूँ, तो मैंने कविता के माध्यम से जो लोग कह रहे हैं कि पटाखा मत जलाओ, पोल्यूशन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, कि जगमगाते दीपों का त्योहार आया है, संग अपने खूब सारी खुशियां लाया है। दुकान से खूब सारा मिठाई लाना है, सोन पापड़ी के डिब्बे को इधर से उधर घुमाना है। चाइनीज झालरों के बीच में, चाइनीज झालरों के जमाने में दिए ओझल हो रहे हैं, हाथों से बने मिट्टी के दिए कहीं खो रहे हैं। अब पटाखों की आवाज पे पॉलिटिक्स होने वाली है। आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ कि अब पटाखों की आवाज पे पॉलिटिक्स होने वाली है। प्रदूषण का दुखड़ा और बस 2 दिन में ही ग्लेशियर पिघलने वाली है। देखिए, ये रोज जो है, ये जो क्रोध है जो एक तरीके से पॉलिटिसाइज किया जाता है, दिवाली और जो हिंदुओं के त्योहार है उनको लेकर है, उसको लेकर दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ हम उस युग में जब प्रभु श्री राम वापस आए थे तब के अयोध्या वासियों के भावों को बताते हुए बाबा तुलसीदास की दोहों की भी बात कर रहे हैं। और जो उत्साह तब था, जो उमंग तब था, आज के दिन जब यूं देखिए दीपोत्सव का, देखिए अब जो छटा है यहाँ की और उभर कर सामने आ गई है। बड़ी देर से जो वॉलंटियर्स हैं मेहनत कर रहे थे और अब दिए जो हैं अब टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बड़े हिस्से में यहाँ दिए जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार दिए यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों के संग दियों को और इस जगमगाती छटा को हम आपको दिखाते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए रिपब्लिक टीवी।
people, you can see viewers coming in from Ayodhya, from the banks of Saryu, the grandeur of the Deepotsav. Chief Minister Yogi Adityanath has just inaugurated the Deepotsav along with Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat and Deputy Chief Minister Brijesh Pathak. Visuals coming in. You can see the Aarti record is also going to be set, viewers, on the banks of Saryu. It's 1,100 people have gathered together, have come together for the Saryu Aarti. And these are visuals coming in. A Guinness World Record once again attempted on the occasion of Deepotsav. Viewers, 8 years is the 8th edition of Deepotsav and the first one after Ram Lala's Pran Pratishtha at the Bhavya Ram Temple.